back to the second lecture of the microeconomics series. So sorry about the earlier videos, the sound is not that audible that I expected. I later on noticed that. So in this chapter we will be covering the 7th chapter of the H.L. Ahuja, consumer behavior, cardinal utility analysis. Okay, so let's move on. So consumer behavior. First, see what the price depends on demands and supply. Okay, and demands depend on the consumer behavior, like this. Consumer behavior, demand depends on consumer behavior. What will be consumer expecting, that is creating demand in the market only. And supply is totally industrial factor. You know that the supply factor can only be from the industry side only. So we consider here from the consumer behavior perspective, we are taking a demand in here as a function of these variable f of px, I, py, pz and t. So demand of a good depends on prices. Demand of good depends on prices. Here is px. Income of the consumer, okay, prices, that I already discussed in the previous chapter also. If prices rises and demand decreases, py and pz are related commodities, like complementary and substitute, that I have already discussed. And t, the taste. You, if those who have not watched the earlier video, you can please watch it and use earphone also before watching that, because the sound is very low in that video. So moving on, a consumer demand depends on utility he gets from that product. Okay, when you buy a product from the market, you demand a product from the market, you get a satisfaction from that product. Whenever, if you are buying a car, suppose, that has to give a certain satisfaction. If you are buying a biscuit packet, ice cream, chocolate, that gives you all things gives you certain kind of satisfaction. That is called utility. That is, utility is satisfaction. And कंज्यूमर की डिमांड उसकी सेटिस्फेक्शन पर तो डिपेंड करेगी कौन सा प्रोडक्ट उसको कितना सेटिस्फाई कर रहा है, तभी तो वो मार्केट में डिमांड क्रिएट करेगा. And utility are of two types. One is cardinal utility, which we will be discussing in this chapter, and one is ordinal utility, which we'll be covering in the next following coming up videos. Okay, cardinal. What cardinal in numeric terms is, in layman terms is in numeric values. Means you measure your satisfaction in terms of some units. Like if you assign some ice cream, if I say please assign your satisfaction to ice cream, biscuit, a book, you will say ice cream, give it 20 unit satisfaction, it gives me 20 unit satisfaction. A biscuit give me 10 unit satisfaction, or a pizza give me 100 unit satisfaction, and a book give me 400, which is unlikely, I know that. A book gives me 400 unit satisfaction. Okay, so this is the basic funda behind this cardinal utility. And measure in terms of a unit or amount of money which one is willing to pay. Okay, the amount of money which one is willing to pay, because the more the satisfaction you get from a product, the more you are willing to spend on that product. And ordinal is just ranking the order. If I say rank those things that you get from the market, like if you order Parle-G at first place, ice cream at second place, a pizza at third place, and book at fourth place. Or apart from that, you could also be asked to order the product in terms of combination. Suppose if I give you two products, one is biscuit and one is chocolate, you are asked to order whether you like one biscuit packet and two chocolate packet, or two biscuit packet or three chocolate packet. You have to order one biscuit or two chocolate, or two biscuit and three chocolate. You have to order this kind of combination, biscuit and chocolate combination. You are I think you are getting, yeah. So this is like that. So we will be discussing here cardinal utility analysis in this chapter. Ordinal that we will be covering in the next chapter given by Hicks. He was a contradictory of cardinal utility assumptions and all thing.
Cardinal utility was put forward by cardinal utility analysis or by Alfred Marshall. So, and the Hicks gives the indifference curve analysis, we will be discussing in the next videos. So you get the term cardinal. Okay, now what Alfred Marshall did is he derives certain kind of with certain kind of assumptions, he reaches to a set of conclusion which we will be discussing, like law of diminishing marginal utility and law of equilibrium marginal utility with set of assumption. First we should see what assumption Alfred Marshall took. So one assumption he took is cardinal numeric measurability of utility, that I discussed you already, that कंज्यूमर है एक, उसकी यूटिलिटी वो गुड ए को 10 यूनिट्स या फिर मनी में तोलता है, गुड्स बी को 20 यूनिट्स, वही चॉकलेट और बिस्किट को मेरी 20 यूनिट यूटिलिटी देता है और बिस्किट जो है 10 यूटिलिटी देता है. और ये भी अजम्पशन लेता है कि यूटिलिटी इज़ क्वान्टिफाइबल. नॉर्मली क्या होता है, वी think of a commodity in a psychological term, that is psychic feeling. You cannot when you go to the market, you usually do not give a rating like it gives me 20 unit satisfaction, it gives me 10 unit satisfaction. So but he assumes that, okay, you know what I am saying. So but he assumes this kind of funda in order to reach to a certain conclusion. So one can compare utility of two goods. Yes, he has assumed that these are two, both of these are this his assumption in the cardinal utility analysis. And amount of money one is willing to pay rather than go without it. Yeah, money. If one consider utility in terms of money, suppose you have two goods, same biscuit, and okay, I will be taking different example. So let's you have two products, a pizza and a burger. You like pizza more and you like burger less. Okay, so burger cost 10 money and a pizza cost rupees 20 money. So amount of money one is willing to pay rather than go without it. आप 20 रुपये देकर आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसकी 20 पिज़्ज़ा देकर, तो यू विल डेफिनेटली गो विद द मनी विद द प्रोडक्ट विच इज़ गिविंग यू हायर सेटिस्फेक्शन. बट आपके पास बजट कंस्ट्रेंट होता है इसके अंदर, तो उसमें अलग आ जाता है. एंड सेकेंड हाइपोथेसिस व्हाट ही अज्यूम इज hypothesis of independent utility, that is utility of one good depends on quantity purchase of that good only. That is, he is saying I will be explaining side by the criticism of this assumption also, so that we do not have to cover it again. So criticism as well as assumption I am discussing here. So what he is telling is, suppose he says you have a petrol car and the number of the quantity of price of product do not depend, price of petrol do not make an impact on the sale of the petrol car. That is, he is saying that utility of one good depends on the quantity purchase of that good only, not other. Okay, utility of petrol is different from the petrol car, but we have already discussed that in the previous video. These are complementary goods. Petrol and petrol car are complementary. Pen and ink are complementary. If the prices of ink have fluctuating, then also the demand of the pen will also fluctuate. So ठीक है, इसने ये assumption लिया है इसके अंदर, utility of A 10 units depend on the quantity of A, utility of B 20 utils depend on the quantity of B. And since he has assumed that they are independent, so if you go to the market and you have listed A, B, C, D product with 10 A or B, A and B product with 10 and 20 util satisfaction, so you can give your one person can economist will give your total utility from A and B product by summing it up is 30 unit. But if they are dependent,
A and B are dependent, then he might be confused because A's demand is also affecting B, but here not depending, independent, so he sums it up. Okay, I know you are getting, yeah, you are good guys, I know. So U is additive in nature here. Okay, and third is constant marginal utility of money. That is very very important. In fact, it is the crux of the assumption he has assumed. It is very highly unlikely. See, there are two perspectives when he assumes that constant marginal utility of money. Two perspectives. Marginal utility of good decreases as more is consumed. Marginal U is here, utilities. I am denoting U by utility. Marginal utility of good decreases as more is consumed, because more of the quantity you are consuming. Suppose you are eating something and eating constantly, but there is a point that you will say, no, I will not take, my stomach is full, I will not go ahead, there is a saturation point, I'm not able to consume more than this quantity. So this perspective is this, that is, marginal utility of goods can be compared with quantity consume of that good. Okay, the amount of quantity that you consume. Okay, and there is another thing which he has assumed is marginal utility of money remains the same. Marginal utility of money remains the same. That means because he says that if okay, we will be discussing this in detail in this video also, but just give you a glance over the what he is saying is, but there is difference between marginal utility of good. What I am want to tell here is there is difference between marginal utility of good and marginal utility of money. What is the difference? Marginal utility of good can be compared with the quantity consume of that good. Okay, हमने कितना, marginal utility of good क्या होता है कि हमने consume कितना किया है उस good को, but marginal utility of money can be compared with the prices of that good, कि उसमें कितना वो कितने पैसे का है, वो पैसा वो कांस्टेंट रख रहा है उसके मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. वो एक इनकम फैक्टर ले रहा है कि वो इनकम फैक्टर मान रहा है उसको कि उसका इनकम फैक्टर सेम रहेगा, ऐसा कुछ बोल रहा है. मगर इनकम भी, एज आई ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो, इफ प्राइसेस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीजेज it creates an income effect and substitution effect. Okay, as I have already discussed in the previous video, if prices of a commodity decreases, it creates an income effect because you are left with some amount of money. Suppose you are buying an item of rupees 200 and its prices are slashed by 100. Now you need only one item, so you are left with 100 rupees also. You are left, after buying that product in 100 rupees, you are left with 100 rupees in comparison to when the prices were 200. So it creates an income effect. You can buy more product or more in more the same product or in a different, so it creates an income effect. That is what I am discussing. But with this assumption, he contradicts that statement. He contradicts that statement कि कॉम्प्लीमेंट्री जो हम अगर मैं इसको सेम रखूँगा तो वो इनकम इफेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा है. ही अज्यूम्स दैट, which is wrong. I know, but he assumes to reach to a certain conclusion. I hope you are getting it. Martial negligence in this is, yeah, I did not see it. I was explaining from here. I have written it also. If prices decreases, then real income increases. So marginal utility of money decreases because अगर money ज़्यादा हो जाता है, utility क्या है? Satisfaction. तो satisfaction, अगर मेरे पास money ज़्यादा हो गया तो satisfaction उसकी कम हो जाएगी ना थोड़ी सी. मतलब उसे इतना नहीं चाहिए होगा मनी, क्योंकि रियल इनकम बढ़ रही है उसकी, उसे इतना मनी नहीं चाहिए होगा, तो वो मार्जिनल यूटिलिटी मनी डिक्रीज हो जाती है. अगर प्राइसेस बढ़ता है, प्राइसेस बढ़ने से कोई 200 की थी वो 400 की हो गई,
तो मेरी रियल इनकम पर फ़र्क पड़ा ना, वो गिर गई। तो उससे मेरे को मनी डियरर हो गया, कि मनी मेरे को अच्छा लगने लग गया क्योंकि मेरी इनकम मैं ज़्यादा दे रहा था, तो उससे मेरी यूटिलिटी ऑफ मनी राइजेस. So it is the criticism that I have. But marginal utility of good can be compared if marginal utility of money is constant. Yes, yeah. This is why he assumes this assumption. You can compare the marginal utility of two goods if the marginal utility of money is constant. That is, with this money, what he can buy. With this money, what he can buy remains constant. Uh, then only he can compare marginal utility of goods. So he kept it constant. And fourth one is introspection method. That is, economists with their own experience, they feel what's in their mind, like less utility by addition of other unit in comparison to earlier, which I already discussed as introspection method. So with these assumption in your mind, that I have discussed, introspection method, constant marginal utility, and independent utility, and cardinal utility is measurable, he reaches to a certain conclusion. He gives two laws actually, which are law of diminishing marginal utility and law of equilibrium marginal utility. M is marginal, U is utility. Okay. I think I forgot to mention what is marginal and what is total utility, which we will be discussing here. So what is diminishing marginal utility? Diminishing is, what he is telling is, if you are consuming say 1 cup of tea, let's first read this. If one takes more goods, extra utility one get from additional goods keep on falling, total utility increases at a decreasing rate. Yes, he is right. He says that if you keep on consuming tea in a particular day, suppose one tea gives you satisfaction, yeah, it gives you 12 amount of satisfaction, and second cup of tea gives you 12 plus 10, यानी कि पहले से घट रहा है. एक कप कॉफ़ी चला, मगर दूसरा भी थोड़ा सा हैवी हो गया, मगर ले लिया, फिर भी सेटिस्फेक्शन दे रहा है, चलो ले लेता हूँ. फिर तीसरा उससे कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है 8 यूनिट, और फिर चौथा उससे कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है 6 यूनिट. करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मैंने इतनी चाय पी ली है कि इतना एसिडिटी बन गया कि मेरे को अब उसकी यूटिलिटी नेगेटिव में जा रही है, मेरे को नहीं चाहिए होता है प्रोडक्ट. सो दैट इज़ ओनली ही इज सेइंग. But what is the difference between total utility and marginal utility is, total utility is the sum of the utility he gets from a particular product. Say from one quantity he is getting 12 utility, from by consuming 2 quantity he is getting 22 utility, and by consuming 3 quantity he is getting 30 utility. So this is telling this. But marginal utility is, what means by marginal utility is change in the utility. हमारी यूटिलिटी में कितना चेंज आया पर कंजम्पशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट. यानी कि मैंने एक चाय का और कप पिया है, ठीक है, उसमें मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी बढ़ी है या कितनी घटी है वो बता रहा है. देखो, लेट्स डिस्कस दिस हेयर. से बाय कंज्यूमिंग वन, टोटल यूटिलिटी इज़ 12 यूनिट. मार्जिनल भी हमारी 12 ही रहेगी इनिशियली, तो क्योंकि डेल्टा Q1 यहाँ पर 1 हो जाता है. हमारे अभी इनिशियल कप ऑफ टी 1 है ना. सो what happen is, so if he is consuming 20 second cup of tea, total utility rises to 22. But what is the change in delta Tu is 10. 22 minus 12 is 10. By delta Q is 2 minus 1, second cup of coffee minus 1, so is 1, so it is 10. Marginal utility is 10. So in this way we calculate this marginal utility, delta Tu, change in the total utility with respect to change in the quantity consumed.
चेंज इन द टोटल यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी कंज्यूम, यानी कि अब इसमें मैं बाय डेल्टा क्यू कर दूंगा तो उसकी वजह से so, अगर मैं हाँ टोटल यूटिलिटी में चेंज कितना आएगा पर कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट, ये एक सिंगल प्रोडक्ट पे बताता है, एक सिंगल कप ऑफ टी पे ये टोटल बताता है। ये सिर्फ यूटिलिटी एक कप के एक कप ज़्यादा कंज्यूम करने से कितनी हो रही है वो बताता है, मार्जिनल। ओके, बाय फ्रॉम दिस वी आर प्लॉटिंग दिस फिगर। सिंस सी फ्रॉम दिस व्हाट इज हैपनिंग इज total utility keeps on rising till 41, till the sixth cup of coffee total utility is rising. Okay, total utility, but by what it is telling is अगर आप जैसे 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 कंज्यूम करते जाओगे पर कप की यूटिलिटी वो डिक्रीज होती जाएगी। टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है मगर पर कप की यूटिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, विच इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। सो अगर हम इस फिगर को, इस डाटा को इस फिगर से कंपेयर करें तो वी कैन मेक अ कर्व आउट ऑफ दिस ऑफ टोटल यूटिलिटी। सपोज दिस इज क्वांटिटी Q1, Q2, Q3 and Q4. Okay, so this is the curve, this is the upward sloping curve to the right hand side. What it shows is by consuming more and more and more quantity, total utility keeps on rising like this. Okay, but यहाँ पर क्या आता है, एक saturation point भी आता है near about after 41. After 41 there is a saturation point which gives marginal utility of a cup, like between 1 and -2 it will also give zero utility. Since we cannot divide like 6.5 cup will give you zero utility, so zero marginal utility, but uh, we are taking this. Okay, so it keeps on rising, but a point comes between 6 and 7 where it, after that it keeps on falling like this, like this, it keeps on falling. Total utility will decreases with quantity increasing. Where my cursor is going on, it will decrease after a point, that is the peak point, that is a saturation point T. I forgot to mention the saturation point, name the saturation point it here, but you can write it, and the T is saturation point. After it total utility will decrease. Now what happen is we have to draw the marginal utility graph also. So since you have seen the marginal utility keeps on decreasing and it goes to the extent that it becomes negative by consuming more and more and more of a quantity. So हम जितनी ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती होती जाएगी और नेगेटिव में भी चली जाएगी. सो दिस इज़ व्हाट दिस ग्राफ इज शोइंग इज, जितनी ज़्यादा हमने क्वांटिटी कंज्यूम करी मार्जिनल यूटिलिटी पहले यहाँ पर थी mu1 पर और वो कीप्स ऑन डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग. सो दिस इज द, I'm sorry, there's background noise going on, but we have to continue because the construction is going on in the nearby building. So what we were discussing, nevertheless I will speak more loud, I guess, that would suppress the background noise. So what I am saying is marginal utility keep on decreasing. Now first look at this one. I hope you are seeing this this triangle. So theta, what does tan theta means is perpendicular by base, that is P by B, that is P is if I see in this, suppose in this triangle, this one, this is perpendicular and this is base. So what does tan theta means is and that is y by x. We take this as y axis and this as x axis. So the P by B tan theta is
y by x or dy by dx equals to du by dq, because in figure 1 that I have shown you here, that is it is perpendicular and it is base and it is a triangle. Okay, so this is du by dq. And what is du by dq we have already discussed is marginal utility. And what does tan theta represent? Tan theta represents slope of the slope of the curve on that particular point. Okay, so suppose here is tan theta, this is theta, where between this line and between dq, uh, here is supposed to be theta. So this represents the slope of this line on the curve where it is touching the at point A. So what we here did is we assume from A we just move slightly upward. We have shown here bigger notation, but we have moved slightly upward. So what benefit we will getting is by moving slightly upward, there will be change in the utility यहाँ बढ़ रही है ना, so utility is increasing. If we go upward here, slightly increase in the utility will be there and slightly increase in the quantity consumed will be there. So du by dq, which is giving the slope tan theta. Tan theta, uh, uh, this is here, tan du by dq is marginal utility, that is slope of figure 1. So now apart from this that derivation we have discussed, how can we derive marginal utility is by drawing tangent to these points. By drawing tangent to these points on the curve of total utility, we can determine marginal utility. Okay, you are getting, by drawing tangents. And another we discuss is uh, by analysis of the data, that marginal utility keeps on decreasing and going to the extent that it becomes negative, we can determine the slope of this. So here see, discuss one more thing, bear with me, I will be my making best effort with this lecture, so that your every doubt is clear. Though it is very difficult to teach like this in this manner, I have never teach in this manner. So but I want to give my best to you guys. So tan theta is positive when theta is less than 90 degree. I think you know that also. If I switch to when theta tan theta is positive when theta is less than 90 degree, when tan theta is negative when theta is greater than 90 degree, but tan theta when theta is equal to 0, it is equal to 0. So that means line is parallel to x-axis. When slope of the curve is slope of the curve basically gives the tangent to the curve. Like I discuss here, it is here and here on the A point theta is less than 90 degree. You are saying yeah, between A this curve and this theta is this, if I match with A axis, so A axis will be parallel to dq, this dq. So here the theta is less than 90 degree, here also less than 90 degree, here also less than, but here theta will be 0 in comparison to x-axis. So here the slope will be 0, that is line will be parallel to the x-axis. But here look it here, if I draw this, suppose this is line, I am drawing this as a parallel, here theta becomes greater than 90 degree. So here slope becomes negative, here slope will remain positive, here slope will become 0, and here slope will become negative. What is slope? Slope means is marginal utility. So हमें यहाँ से क्या पता चला कि कि जैसे जैसे ये लाइन बढ़ रही है, थीटा पॉजिटिव है, टेन स्लोप पॉजिटिव है यहाँ पर, बट वो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि टेन थीटा जैसे ही बढ़ता जा रहा है, घटता जीरो के पास जा रहा है, वैसे वैसे टेन थीटा जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है. तो स्लोप भी जैसे 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 बढ़ता जा रहा है, उसका टेन थीटा घटता जा रहा है, वैसे वैसे वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है. और एक पॉइंट आता है जहाँ पर ये नेगेटिव भी हो जाता है, लाइक हेयर
it is becoming negative, slope is becoming negative, so does the marginal utility goes to below x-axis. Below x-axis, you know, this is positive y, this is negative y, so here it becomes negative. I hope I make my best effort to give a proper explanation to this. And another way of drawing the curve is, suppose q1, you draw the parallel to q1 here, also q2, q3, q4, like this, in this manner, okay. And you know that marginal utility is decreasing. Here it is mu1, so it was mu1 like you did it here, and since it is slightly moving towards 0, you can google the graph of the tan theta. If you do not believe me, just wait, I want to show you the tan theta graph. Sorry, I should not yeah, it is here. See here, when between 0 to theta, 0 to 90 degree, what value of y keeps on increasing. If we move from 0 to 90, but if we move from 90 to 0, that is theta is decreasing, tan theta y की वैल्यू कहाँ जा रही है, y की वैल्यू यहाँ से फिर 0 वापस जा रही है. अगर हम 0 से पाई बाय 2 का मतलब होता है 90, तो y की वैल्यू बढ़ रही है. This is what it is, okay. So this I have discussed is total utility, and at any point is sum of marginal utility, yeah, and area under marginal utility curve as qt. So if one says determine give me the total utility, so you can determine total utility by summing the marginal utility. Like here, if you 12 plus 10 is 22, if you add 8 it to here, it becomes 30. That means 12 plus 8, 10 plus 8 gives you total utility 30. And in similar fashion, if you add 6, it becomes 36. If you add plus 4, it becomes 40. So summing up the marginal utility will gives you, बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी क्या देता है हमें, एक प्रोडक्ट पे देता है ना, एक सिंगल एक क्वांटिटी और ले ली, एक और ले ली, एक और ले ली, उसकी बताता है. टोटल यूटिलिटी क्या बताता है, सारी क्वांटिटी की बताता है. तो हम मार्जिनल यूटिलिटी को सम कर देंगे तो हमें टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी. बट एक और इससे हम पता लगा सकते हैं इज हाँ, बाय there is one more method we can determine the marginal total utility is area under this curve. Marginal utility, area under this curve, this curve. Suppose this is q4, something like say 10 here, and here it will be meeting on the y-axis. So we will be determining total utility is area under the marginal utility curve, क्योंकि वो sum up हो जाता है सारा. So moving on to the next topic, significance of diminishing marginal utility. Like we discussed, marginal utility हमारी यहाँ decrease हो रही है, diminish हो रही है, but what is the significance of it? What is the significance of it? It will help us explaining. मार्शल ने पहले assumption लिया, assumption से इसने ऐसा कुछ ड्राइव किया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. बट उस लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है, उसने लॉ क्यों निकाला है, उसका हम सिग्निफिकेंस डिस्कस करेंगे. इसका भी आएगा अभी नंबर, तो हम उसका सिग्निफिकेंस डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से. तो ये इट विल हेल्प अस एक्सप्लेन द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड. व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, इट विल हेल्प अस, विच आई विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन. And second point, it will help us explain is total utility does not determine prices of good, but it is mu that did determine prices. total utility से हमें prices का पता नहीं चलता है, marginal utility से पता चलता है. और it will help us explaining the ये भी आगे आएगा कि marginal utility से हम prices, मगर total utility से क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि टोटल यूटिलिटी तो पूरे प्रोडक्ट की है, पूरे जितने भी कंज्यूम किए हमने.
मार्जिनल यूटिलिटी हमें सिंगल के बारे में बता रही है, तो उससे हम प्राइसेस का पता लगा पा रहे हैं कि हमारी सेटिस्फेक्शन इतनी बढ़ रही है और हम वी आर एबल टू गिव फॉर दिस मच सेटिस्फेक्शन आई एम गिविंग 10 रुपीज़। अगर हमारी सेटिस्फेक्शन है किसी भी चीज़ में, तो हम उससे प्राइसेस का पता लगा सकते हैं। और इससे हमारा एक वाटर डायमंड पैराडॉक्स जो बहुत ही फेमस था कि वाटर वाई प्राइसेस ऑफ वाटर इज़ लो एंड द डायमंड इज़ हाई, बिकॉज वाटर इज़ सो मच अबंडेंट in the environment. Water you will find everywhere, so marginal utility is low, क्योंकि वो easily मिल जाता है, हमें इतनी satisfaction feel नहीं होती है हमारे, क्योंकि water हमारे पास हमेशा रहता है, so उसके prices भी low रहते हैं। वही बात आ गई ना। और डायमंड स्कार्स है, उसकी वो हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि हमें डायमंड मिले, तो जितनी ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशंस यूटिलिटी है तो प्राइसेस भी उतने ज़्यादा रहेंगे। सो हमें क्या करना चाहिए, इन ऑर्डर टू बी ए गुड पर्सन यू शुड यूटिलिटी, हमारी एक्सपेक्टेशंस कम होनी चाहिए, तब प्राइसेस अपने आप कम आ जाएंगे। सो सेकंड द लॉ वी विल बी डिस्कसिंग, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी। This is very important law. This is very very important law. Law of equilibrium marginal utility explain us. See what before moving on to every topic, you should first discuss. You should first in yourself analyze what it is discussing. Equilibrium. When will be the equilibrium? There could be equilibrium when the consumer whole income is spent. अगर मैं सारी की सारी इनकम दे देता हूँ किसी 2-4 गुड्स को ख़रीदने में, और मार्जिनल यूटिलिटी की कब इनकम रहेगी? क्योंकि देखो क्या होता है, जब हम कोई गुड्स ख़रीदते हैं तो वो हमें सेटिस्फेक्शन अलग अलग देता है। किसी से हमें 10 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है, किसी से हमें 20 यूनिट्स की, किसी से हमें 100 यूनिट्स की। बट अगर पर मैं जो पैसे स्पेंड कर रहा हूँ चीज़ों को ख़रीदने में, मेरी 1 रुपये की सेटिस्फेक्शन सभी प्रोडक्ट के लिए उतनी रहेगी, विच विल बी एक्सप्लेनिंग इन ए मोर इलाबोरेट फैशन। बट मेरी बातें एक एक गौर करके सुनना, वरना टॉपिक निकल जाएगा, कहीं दूसरी तरफ ध्यान हो। एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, consumer in equilibrium when marginal utility of money expenditure on each good is same. That is what I am saying, is what I was saying. जब हमारा एक गुड के ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, पर सिंगल प्रोडक्ट पे हमारा जो मनी एक्सपेंडिचर रहता है हर एक गुड के लिए सेम रहे, और मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच गुड इज इक्वल, और in another fashion, suppose this marginal utility of money expenditure, that is per rupee spent, how much utility you are getting should be equal for every product. मैंने 1 रुपया दिया है, मेरे पास 1000 रुपये थे, मगर हर 1 रुपये स्पेंड करने पर मैं 1 रुपया भी देता हूँ हर एक प्रोडक्ट को, उस 1 रुपये से इक्वल सेटिस्फेक्शन आनी चाहिए हर एक प्रोडक्ट के लिए। वो अलग बात है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट टोटल सेटिस्फेक्शन ज़्यादा दे रहा है या कम दे रहा है, मगर मेरा 1 रुपया हर एक प्रोडक्ट, अगर मान लो मैंने एक गुड ए को B C D खरीदे हैं, ए दे रहा है मुझको 10 यूनिट, बी दे रहा है 20 यूनिट, सी दे रहा है 30 यूनिट, डी दे रहा है 40 यूनिट्स, बट वो अलग अलग दे रहे हैं सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी, बट माई ईच रुपी स्पेंड ऑन दैट प्रोडक्ट ABCD विल गिव मी द सेम सेटिस्फेक्शन। ये जनरल वे में भी देख के सोचो ना। हम लोग कार खरीदते हैं, कार महंगी है, वो हमें सेटिस्फेक्शन दे रही है ज़्यादा, हमारी यूटिलिटी उसके लिए ज़्यादा है। एक हम लोग चॉकलेट खरीद रहे हैं, बिस्किट खरीद रहे हैं, उसके प्राइसेस भी लो है, वो भी हमें सेटिस्फेक्शन दे रही है, मगर मैं उसकी यूटिलिटी जो मुझे चॉकलेट चाहिए थी उसके प्राइसेस से डिवाइड करूँगा, क्योंकि उसमें पर वो आ गया ना, पर ये वाला सीधा कर्सर पर रुपी स्पेंड, चॉकलेट में और कार में सेम होगा। कार की यूटिलिटी भी ज़्यादा है, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा दे रही है, प्राइसेस भी ज़्यादा है। इफ़ आई डिवाइड पर रुपी स्पेंड हाउ मच यूटिलिटी यू आर गेटिंग, दैट इज़ व्हाट here in the equilibrium marginal utility is for each and every good per rupee spent
the utility will be equal, that is marginal utility of money expenditure, that is mu, which gives you marginal utility of x by px of good x. And then like we discussed, marginal utility is du by dq. Both are different. Here we are discussing marginal utility of good, and here it is marginal utility of money expenditure. Both are different. Like गुड्स में क्या होता है, हम गुड्स की कैसे निकाल सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी? हम गुड्स में तो वही कह सकते हैं बाय डेल्टा क्यू, क्योंकि गुड्स को ही तो वेरी करेंगे। मगर मार्जिनल यूटिलिटी में हमें प्राइसेस पे डिपेंड करेगा ना, तो हमने यहाँ पर प्राइसेस से डिवाइड किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यहाँ पर टोटल यूटिलिटी नहीं आएगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल टू marginal utility of product x you are buying divided by prices of that product. But marginal utility of good is change in the utility, total utility by change in the quantity. ये बहुत दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर मनी है तो हमने प्राइसेस लिया है उसका, गुड्स का। यहाँ पर गुड्स था तो हमने यहाँ पर डी क्यू लिया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मार्जिनल यूटिलिटी एग्जाम्पल इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ब्रिटानिया इज 50, prices of the Britannia is 10 rupees, so marginal utility of Britannia will be 5 rupees. okay, क्योंकि ब्रिटानिया मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है ना, 50 का दे रहा है। मगर एक फिर आइसक्रीम मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। ब्रिटानिया का बिस्किट मुझे 50 की दे रहा है, मगर आइसक्रीम मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उसका 100 था यूटिलिटी, मगर उसके प्राइसेस 20 रुपये थे। तो पर यूनिट कितना आ गया मार्जिनल यूटिलिटी? यहाँ पर भी 5 थी, यहाँ पर भी 5 आ गया, 100/25। तो these are giving me equal satisfaction per rupee spend। मैंने 20 का इस पे डिवाइड किया तो 5 की एक रुपये में मेरे को यहाँ पर भी 5 की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अगर मैं यहाँ पर एक एक करके 20 रुपये कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पर 100 रुपये की सेटिस्फेक्शन 100 की सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। इन द सिमिलर फैशन यहाँ पर भी मुझे पर रुपी स्पेंड मेरा 1 रुपया जाता है तो मुझे यहाँ पर 5 की सेटिस्फेक्शन मिलती है। 10 रुपये जाएंगे तो 50, तभी मैं खरीद पाऊँगा मेरे प्रोडक्ट। ठीक है, so this is funda behind the equilibrium marginal utility. So both are equal. So in the similar fashion, mux by px, that is here we are like 50/10, 50/10, here 100/20 equal to marginal utility of money expenditure. I hope you are getting this. Is very important concept. We will also be explaining this with an example. It will make you the concept very clear. These are the conditions. So marginal utility equilibrium की condition क्या क्या है? 2 condition है। फर्स्ट इज दिस वन एंड सेकेंड इज आपकी पूरी की पूरी इनकम स्पेंड होनी चाहिए। होल ऑफ द इनकम मस्ट बी स्पेंड। क्योंकि अगर मनी पूरा स्पेंड नहीं करे तो फिर हम लोग अच्छे से कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। सपोज वी हैव this I will be explaining here with a very good example. This is which I myself take. Suppose you have an income, money income is rupees 60 rupees. You have 60 rupees with you. So money income is rupees 60 and prices of ice cream is rupees 10 and prices of biscuit is y. Prices of ice cream x and good x is ice cream, good y is biscuit. So rupees 10 and 5. So suppose you are consuming 1 2 3 4 5 and up to 6 units of items. So suppose marginal utility of ice cream, एक पहली आपने आइसक्रीम खाई, उसकी 100 satisfaction you are okay, and it keeps on decreasing. As you all know that marginal utility keeps on decreasing. So second unit में 90 हुई, थर्ड पर 80, फोर्थ पर 70। एक्स इज आइसक्रीम, जैसे जैसे मैं जितनी ज़्यादा आइसक्रीम खाता जाऊँगा मेरी 50 पर आ जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी, सिक्स्थ पर। ऐसे ही बिस्किट पर, बिस्किट में क्या हो रहा है, फर्स्ट यूनिट विल गिव मी 35 एंड सेकेंड 30 यूनिट, third 25 unit. This is marginal utility, remember, not total utility, and it keeps on decreasing, like we said, diminishing marginal utility. Now what is mu by px? That is mux by px is
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर, मेरा 1 रुपये पर रुपीज़ पे कितना यूटिलिटी मिल रहा है एक्सपेंडिचर का, जैसे हमने यहाँ किया था, दैट वी डिस्कस हेयर. इट गिव्स मी suppose prices, what is prices of ice cream is 10, so if we divide 100 by 10 is 10, 90 by 10 is 9. In this similar fashion 10, 9, 8, 7, 6, 5. Okay, and biscuit price is 5 and MUY by PY is 5 by 35, 35 by 5 sorry is 7, 7 5 35, so 35 by 5 is 7, 30 by 5 is 6 and 25 by 5 is 25, 5 into 5 is 25. In the similar fashion, if I divided 20 by 5 is 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Now what happen is, in the equilibrium we know that these two have to be equal, like we discuss here, these two have to be equal and the total money have to be spent. So where are these terms equal, like this is 7 and this is 7, these are the two possibility, and this 7 is unit 4 I am consuming of ice cream, that is X, and at this 7 I am consuming only 1 unit of Y, that is biscuit. So 4 unit into price is 10, 10 है ना ice cream का, plus 1 unit of ice cream into 5 is give me 45, giving me 45, which is less than the income I have. हमारे पास तो 60 रुपये है ना, तो मुझे पूरी सेटिस्फेक्शन तो यहाँ से मिलेगी नहीं, 45 ही मिली. सो वी मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज 6 6 मैच हो रहा है, बोथ आर मैचिंग. सो एट दिस 6 वी आर कंज्यूमिंग 5 यूनिट ऑफ आइस क्रीम and at this 6 we are consuming 2 unit of biscuit. So 5 unit of ice cream into price of ice cream 10 plus 2 unit of biscuit into price of biscuit 5 is giving me 60, which is equal to 60. Okay, that means both the condition are satisfied, that is these two condition, both the condition are satisfied. Nevertheless, we should also see at this point also, at 5 we are consuming 6 units, 6 into 10, and at this 5 we are consuming 3 units of biscuit, 3 into 5, this is 75, which is more than the income I have. So the best equilibrium position will be this. So at this equilibrium, what will I be buying is 5 packets of ice cream and 2 packet of biscuit. This gives me maximum satisfaction at the equilibrium level. So I hope you get it. I try to explain in a very fine manner. This is law of marginal utility, equilibrium marginal utility. Equilibrium में ये होता है, ठीक है. Now हमें like we discuss this one, what is the significance of marginal utility. So it helps us to derive the demand curve. Demand curve क्या होती है? Demand curve, what it tells is price is बढ़ा तो क्वांटिटी बढ़ गई, क्वांटिटी घट गई, the demand of the quantity decreases. So we will be deriving demand curve and law of demand from marginal utility analysis of law of equilibrium, जो हमने अभी पढ़ा है, law of equilibrium marginal utility. Like this, suppose we discuss it here in the at the equilibrium, this is the condition. हमें यहाँ से डिराइव करना है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस से. हमें कहाँ जाना है? प्राइसेस एंड, क्योंकि डिमांड कर्व क्या बताता है हमें? प्राइस और क्वांटिटी तो बताता है. डिमांड कर्व इज बेसिकली ऑल अबाउट प्राइस एंड क्वांटिटी. प्राइसेस बढ़ा तो क्वांटिटी नीचे आएगी, प्राइसेस घटा तो क्वांटिटी बढ़ेगी. तो हमें यहाँ से यहाँ पर जाना है, तो हम कैसे जा सकते हैं? सो फर्स्ट वी विल डिस्कस समथिंग लाइक दिस. सपोज इफ prices of a product X decreases, other thing remaining constant, that is ceteris paribus. Okay, ceteris paribus. So if prices of a commodity decreases, so क्या होगा? ये वाली term, if denominator decreases, suppose if denominator decreases, then this term, whole term will be greater.
विल बी ग्रेटर देन दिस टर्म, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, एम यू वाई और पी वाई दोनों कांस्टेंट है, ये सब कुछ कांस्टेंट है। एम यू, यहाँ पर एम यू एक्स नहीं आएगा, यहाँ पर एम यू एम आएगा, सॉरी दिस वन इट विल शुड बी एम यू एम और एम यू एम। सो अगर हमारा डिनोमिनेटर के घट गया है, सपोज वी आर डिवाइडिंग 100 बाय 10, it gives you 100 by 10 is equal to 10, but if denominator decreases it, like 100 by 5, it will give you 20. It 100 by 5 is 20, earlier we were getting 100 by 10 10, so this increases. So to make it equilibrium, to restore equilibrium, what should be the way out? Way out is MUX should be reduced, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी बढ़ गई है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमें न्यूमिरेटर भी डिक्रीज करना होगा। और न्यूमिरेटर कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी हैव टू बी डिक्रीज। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स हमारी सेटिस्फेक्शन उस प्रोडक्ट से कम होनी चाहिए। प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन से कब कम होगी? जब हमारे पास वो प्रोडक्ट पहले से ही ज़्यादा होगा। सो it will be only possible if you have more quantity of good X. ठीक है? So what happen is, if the prices of a commodity decreases, quantity of that commodity should rises, because that will make the MUX less. So this is what the law of the demand curve is. Law of the demand curve is this only: if the prices decreases, quantity increases, and vice versa. You should also write vice versa. So now as MUX, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड डिमिनिशिंग, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी हमने पहले देखा है, मार्जिनल यूटिलिटी इज ये रहा, मार्जिनल यूटिलिटी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड डिमिनिशिंग, या वी हैव ऑलरेडी सीन इट। सो डाउनवर्ड स्लोपिंग, सो डज MU बाय PX। PX क्या है? एक प्राइस है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट भी रहता है, वेरी भी करता हो चाहे, मगर एक वो एक न्यूमरेटर, हम किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, मगर उसकी क्वांटिटी थ्रू आउट तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। सो इट विल ऑल्सो बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। हमने क्यों किया है ऐसा? क्योंकि हमें हमें इससे MUX बाय PX और MUY बाय PI इक्वल टू दिस, हमें इससे कहाँ पर जाना है? प्राइस एंड क्वांटिटी पर जाना है। तो हमें प्राइस तो लेके आना पड़ेगा ना कहीं पर, क्योंकि वी हैव टू डराइव फ्रॉम दिस द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इज व्हाट? प्राइस एंड क्वांटिटी, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। सो इफ आई डिवाइडेड MUX बाय PX, MUX का डाउनवर्ड स्लोपिंग था और डिमिनिशिंग भी था, नीचे जा रहे हैं तो डिमिनिश हो रहा है, तो ये भी तो वही करेगा, कांस्टेंट से डिवाइड किया है तो वो भी वही दिखाएगा कि PX इज प्राइस, कांस्टेंट रहता है, सो टर्म डिवाइडिंग। सो डज द MUX बाय PX भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और डिमिनिशिंग होगा। सो हमने क्या किया? हमने तीन वो MUX बाय PX इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, these are all downward sloping. Okay, now I have to derive the demand curve from this. Suppose this is the curve initially. Okay, MUX by PX1, this is MUX by PX and this is the quantity on this side. Now what happen is, agar prices of a commodity increases, then like we discuss here it is vice versa, that is prices of a commodity is decreasing. If decreases, then MUX is also reduced, but vice versa is, if prices of a commodity increases, MUX should be increasing. So it will move in that direction, in upward direction. So if prices of a commodity, sorry, I have write something wrong here, I guess. No, it's okay. No, ठीक है. If prices of a commodity decreases, like PX1 था तो हमारे PX2 आ गया, प्राइस डिक्रीज हो गए. सो दिस टर्म लाइक ऑलरेडी डिस्कस इज यहाँ पर अगर ये PX घटता है तो ये टोटल टर्म बढ़ जाएगी ना. तो in this similar fashion it will move this word, and if prices reduce further to PX3 it will move this word. But
uh, this we have shown the law of marginal equilibrium analysis. So here is the quantity. Here this curve is the MUM, because we have assumed that marginal utility of money expenditure is constant. Constant means in a straight line, and it will be fixed, so it will be like something here. And when it cuts this axis, this should be equal, na? At what? This should be equal, MUX by PX should be equal to this. So at this point, this is the equilibrium point. This is the equilibrium point at this curve when the prices are px2. This is the equilibrium point when prices are px3. Okay, as the prices increases, the equilibrium is shifting this word, this word, and quantity consumer also increasing. So जैसे हमारी quantity इस side increase हो रही है और prices are decreasing, prices decrease हो रहे हैं इस side में और quantity increase हो रही है. So what we could derive from this is हमने इसके पैरेलल में Q1 लिया, Q2 लिया, Q3 लिया, like this. यहाँ पर क्वांटिटी लिया और इस पर px ले लिया. जैसे हमारे प्राइसेस px डिक्रीज हो रहे थे फ्रॉम px2 px2 px3, लाइक इन द सिमिलर फैशन वी हैव टेकन px1 px2 एंड px3. यहाँ पर प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, डिक्रीज होता जा रहा है वाई एक्सिस पर. तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ था? यहाँ पर A था. इक्विलिब्रियम पॉइंट आया था Q1 पर, Q2 पर, Q3 पर. So in the similar fashion we draw this curve and it is downward sloping, hence proved. और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. And now the critical analysis, I think the video is getting too long. I will be covering it in a fast manner, don't worry. Cardinal evaluation, critical evaluation of marginal cardinal utility analysis. He like we already discussed, he has assumed unrealistic assumptions like cardinal utility is measurable. How can one measure the psychic feeling, like I discussed in the very first starting of this video? How can you measure the psychic feeling of a commodity? How can you term कि मुझे पार्ले जी पर 10 की satisfaction होती है, ऐसा होता है. वो J.R. Hicks is which gives the indifference curve analysis, which we will discuss in the next video. He mentioned this. And next is the independent utility hypothesis is wrong when he assumes that like in the petrol and diesel we discussed, he says utility of petrol is different from utility of petrol car. So in the similar fashion, because they are complementary and substitute, he where Marshall sums up the utility of separate good, but what happen if सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, हमारे पास तो सब्सटीट्यूट में तो इसकी यूटिलिटी इस पे दोनों की डिपेंड करती है. बट ही क्योंकि अगर हमारे पास कॉफ़ी है, हम टी पी रहे हैं और कॉफ़ी की प्राइसेस रिड्यूस होते हैं, तो उस हमारी यूटिलिटी कॉफ़ी की भी रहती है, तो हम कॉफ़ी पर शिफ्ट करेंगे, टी की घट जाएगी. तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, हमें पता है. सो एज अ रिज़ल्ट इससे क्या होता है, क्योंकि वो दो कमोडिटी को एक ही मान रहा है ना, वो सब्सटीट्यूट तो मान ही नहीं रहा. सब्सटीट्यूट तो उसका कहना है कि ना तो सब्सटीट्यूट होता है, ना ही कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ना ही डीजल और पेट्रोल. इसका मतलब क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि मार्जिनल डिमांड थ्योरम कैन बी डिराइव्ड ओनली इन वन कमोडिटी ओनली. इसका रिजल्ट यही है. सो कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नॉट वैलिड, because we have already assumed that marginal utility of money remains constant. We have already explained this. But as I already discussed, if one spends income on goods, money left with him declines. Okay, so if I am spending money on a particular good in the market, I have suppose 100 rupees income and I spend 40 rupees and now I left with the 60 rupees. मगर अब वो 60 रुपीज़ कम होने की वजह से मेरी यूटिलिटी उनके लिए बहुत ज़्यादा हो गया, वो मुझे डियरर हो गए हैं, क्योंकि पहले तो मेरे पास 100 थे, मैंने खर्च कर दिया. मगर ये अज्यूम क्या कर रहा है, कांस्टेंट रहती है, तो वो विच इज़ रॉन्ग. सो दिस इज़ द क्रिटिक ऑफ दिस. वाई मार्जिनल यूटिलिटी एम कांस्टेंट, बिकॉज ही मेजर MU in terms of money that we have already discussed. अगर plus apart from this, if price of a commodity change, it creates a real income effect also, because if suppose prices of a commodity decreases,
from 200 to 100, you are left with the 100, so it creates an income effect for you. But Marshall says that it will not create any income effect. Marshall ignored this income effect, but we saw that from our open eyes. You can also see there is an income effect. So Marshall neglected the income effect of the price change. This is very critical. Hicks also criticized Marshall on this point also. Income of because prices change will gives us income effect and substitution. Could not explain Giffen paradox. Giffen paradox we have already discussed in the last video. इसने बोला है कि this is an exception to the law of demand in the गिफन में क्या होता है कि जैसे प्राइसेस बढ़ते हैं वैसे ही क्वांटिटी डिमांड ऑफ इट इंक्रीजेस. गरीबों के लिए होता है ना, ऐसे जी फॉर गिफन गरीब निकाला था. तो this he says is, but he could not explain this factor. He only said this is an exception to this. And now here we are explaining one commodity, and that is the third point. A little bit explanation of that is Marshall theorem Marshall demand theorem can be derived only in one commodity. So suppose this mu marginal utility of money is mux by px1. So mux क्या हो जाएगा, marginal utility of good. हम यहाँ पर px को यहाँ भेज देंगे, ये हो जाएगा. This is very typical, but I am still explaining this. You can skip this because examiner is not going to ask this. You can skip this if you do not understand this. Okay, so what happen is, agar price marginal utility of product X is, this topic you can skip, okay, but in the book it is mentioned, so I am explaining in a bit detail, like 1 or 2 minutes it will take. MUM into PX1, marginal utility of money into PX1. Marginal utility of money is considered to be constant, but what happens is if the price rises increases from PX1 to PX2, so what will be this equation will be in this scenario PX2 is greater, so यहाँ पर हम PX2 लिख देंगे, तो this term will be greater than this term. So equilibrium disturb हो गया, the equilibrium gets disturbed. To make it back to an equilibrium, either what changes we have to make. PX2 is constant, we have already changed it. Either we have to change this, either we have to change this, but this is marginal utility of money which remains constant according to the assumption. We cannot change it, so we left with MUX. So in order to make it in equilibrium, marginal utility of the product have to rise. Marginal utility of the product have to rise, that is we have to consume less quantity of it. अगर हमारे पास थोड़ा होगा तभी तो उसकी utility satisfaction उससे हम ज़्यादा expect करेंगे ना. So suppose there are two things. PX1 is the earlier on prices, we are consuming Q1 quantity, and PX2 is the now the new prices we are consuming at Q2 at this prices we are consuming, because Q2 is less than Q1. We have already discussed, क्योंकि हमें marginal utility को बढ़ाना है तो हमें product की quantity consumption घटानी पड़ेगी. So Q1 is greater than Q2. But what happen is, हमारे पास मनी स्पेंड तो क्या रहेगा, प्राइस हमने जो कमोडिटी का प्राइस है और कमोडिटी की हमने कितनी कमोडिटी खरीदी है, तो वो रहेगा ये. हमारे पास मनी तो इतना ही है ना, प्राइस इनटू कितना हमने प्रोडक्ट खरीदा और कितना प्रोडक्ट का प्राइस है, दिस. ये हमारा पहले की सिचुएशन थी. नाउ द सिचुएशन शिफ्ट्स टू दिस, PX2 into Q2, that is Q2 quantity we are buying at a price PX2 of that similar product. Money income has to be equal in both the scenario. So what could be the possibility? Either these two can be equal, so this could be equal. Either this will rise or either this will rise. There could be two possibility, and we have to make it into an equilibrium. This is marginal utility at price P2 is PX2 into MUM. So what happen is, in the either of the two case, suppose if we have PX1, just a second,
नाउ इन ईदर ऑफ द टू केस, अगर हमारा यहाँ पर ये वाला px2 इंटू क्यू टू इज़ ग्रेटर देन दिस, तो हमारा बजट ही डिस्टर्ब हो गया। बजट ही हमारे पास उतना था ना, हमने पहले भी तो फुल मनी स्पेंड किया था, तो ये पॉसिबिलिटी भी गई कि हमारा ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी। और अगर ये लेस होता है, अगर ये लेस होता है, दिस वन इज़ लेस देन दिस, बजट कंस्ट्रेंट इज़ लेस देन, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इन ईदर ऑफ द टू केसेस इट इज़ नॉट पॉसिबल। So either money, marginal utility of money has to change, but this he has assumed constant. So in the hence this can only be in a case of one commodity. I hope you get it. Okay, we will meet in the next video. Do give me your reviews on these links or on the YouTube, so that I could improve or I could help you more in explaining the facts. Thank you.